کہ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की सलाह मुतासरा इलाकों के दौरे पर सखर आमद हुई है। मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, काबीना अरकान और अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द भी उनके हमरा था। सखर एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी है। एंटोनियो गुतेरेस का सैलाब से कीमती जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, आलमी बरादरी को पाकिस्तान की सूरत हाल को संजीदगी से लेना चाहिए। सैलाब से निमटने के लिए पाकिस्तान को बड़ी इमदाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाके औस्ता मोहम्मद रवाना हो गए हैं और वहाँ पर सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर सखर आमद हुई। वहाँ पर मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई तौर पर जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, काबीना अरकान और अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द भी उनके हमरा था। सखर एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी और तमाम तर सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। एंटोनियो गुतेरेस का सैलाब से कीमती जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस किया गया है। उनका कहना था कि आलमी बरादरी को पाकिस्तान की सूरत हाल को संजीदगी से लेना चाहिए। सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए पाकिस्तान को बड़ी इमदाद की ज़रूरत है। इसी पर ही बात करते हैं अपने नुमाइंदे हसनैन ओहलक से। हसनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस यहाँ पर दौरा सिंध के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। सैलाब ने जो तबाहकारियाँ की हैं सिंध में, उसका जायजा लेने के लिए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ हमरा वो यहाँ पर सखर पहुँचे हैं, जहाँ पर वज़ीर आला सिंध मुराशा की जानिब से उनको ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि जितनी हालिया तबाहकारियाँ हुई हैं सिंध में सैलाब की वजह से, इससे पहले कभी भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ज़मीनी रास्ते हैं वो भी कट चुके हैं। यहाँ पर जो सैलाब के बाद है जो यहाँ पर मुतासरीन हैं उनकी बहाली के लिए यहाँ पर आलमी जो अक़वाम हैं उनको भी मदद करने की ज़रूरत है और यहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी बहाली के लिए जो काम है वो किए जा रहे हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने भी बताया कि यह पाकिस्तान में ये जो तबाहकारियाँ हुई हैं ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हुई हैं और उन्होंने ये भी यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान की जिस मुमकिन मदद है वो की जा सकेगी। फिलहाल सखर से वो औस्ता मोहम्मद के लिए रवाना हुए हैं, जहाँ से वो बजरिया हेली वो लाड़काना पहुंचेंगे। बेनज़ीर मेडिकल यहाँ पर यूनिवर्सिटी है जहाँ पर वो फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा करेंगे, जिसके बाद वो आलमी विरसा मोहनजोदड़ो जाएंगे। मोहनजोदड़ो वहाँ पर वो उनको ब्रीफिंग दी जाएगी और ब्रीफिंग के बाद उनका दौरा करवाया जाएगा। दौरे के बाद वो वापस पहुंचेंगे बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ से वो बरास्ता फैली वापस इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। जी हसनैन ओहलक, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर सखर आमद हुई। मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, काबीना अरकान और अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द भी उनके हमरा था। सखर एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया। एंटोनियो गुतेरेस का सैलाब से कीमती जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस किया। उनका कहना था कि आलमी बरादरी को पाकिस्तान की सूरत हाल को संजीदगी से लेना चाहिए। सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए पाकिस्तान को बड़ी इमदाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाके औस्ता मोहम्मद के लिए रवाना हो चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सिंध के दूर दराज इलाकों का दौरा करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रिलीफ और मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल पाक फौज के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। बादजा, दादू, खैरपुर नाथन, जूही, मेहड़ और मंछर का फ़ज़ाई दौरा भी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सिंध के दूर दराज इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं।
अहम खबर आपको देते हैं, नवाबशाह एयरपोर्ट को 25 सितंबर तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। CAA ने नया नोटिस जारी कर दिया है। नवाबशाह एयरपोर्ट में ताहाल सैलाबी पानी मौजूद है। सैलाबी पानी के बायस नवाबशाह एयरपोर्ट को गुज़श्ता माह से फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद किया गया था। लाहौर और कराची के दरमियान उड़ने वाली फ्लाइट्स के लिए मुल्तान एयरपोर्ट को सेकेंडरी एयरपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओस्ता मोहम्मद पहुंच चुके हैं। उनके साथ एंटोनियो गुतेरेस भी मौजूद हैं और वहां पर वो सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। और जाफराबाद के इलाके में मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। बलूचिस्तान के इलाके ओस्ता मोहम्मद पहुंच चुके हैं और ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ओस्ता मोहम्मद में वो सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे, उनकी दादरसी करेंगे, उनका दर्द बांटेंगे और उनसे मुलाकात करने के लिए एंटोनियो गुतेरेस वहां पर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनके हमरा हैं और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बलूचिस्तान के इलाके ओस्ता मोहम्मद पहुंच चुके हैं, जहां पर वो सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे, उनका दर्द बांटेंगे, उनकी दादरसी करेंगे और मुलाकात करने के सिलसिले में वो वहां पर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनके हमरा हैं। इससे कबल वो सक्खर पहुंचे थे और वहां पर उन्हें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ब्रीफिंग दी थी और अभी वो बलूचिस्तान के इलाके ओस्ता मोहम्मद पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके हमरा हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एंटोनियो गुतेरेस ओस्ता मोहम्मद पहुंच चुके हैं, जहां पर वो सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। Has been noticed and exceptionally heavy rainfalls and cloud outbursts were noticed, which were 5 to 6 times more than the 30 years record rainfall, and 32 out of 34 districts of Balochistan. And this is the largest province, occupying 44% of Pakistan and rich in mineral resources. Red districts are the heavily affected, and we are here at the moment. So this is bordering the province of Sindh, the north of Sindh, where you have just visited and coming from. Excellency, 270 people have perished in last 3 months. The rainfall started on 13th of June and continues until recently. 1.3 million people have been displaced. 185,000 households have been either completely damaged or partially affected. 500 livestock perished, 100,000 poultry have been killed. So a lot of infrastructure has been damaged. Bridges, one railway bridge also caved in. 900,000 acres of land has been affected, agriculture lands and orchards. So the government of Balochistan evacuated more than 125,000 people safely and reached to 1 million of people who were trapped because of the road disconnectivity. We provided almost 119,000 people, families with food packs. There is a gap of 66,000. 56,000 tents were provided. 129,000 tents are still a gap. Because these districts, 5 districts we are here, these are completely inundated. Still the water is there in the fields, houses have been raised. So we even lost half of our healthcare facilities. So we have conducted emergency medical camps. 1,476 camps have been held in these 3 months, and more than 353,000 people have been treated. At the same time, 540 veterinary mobile camps have been set up, and more than 1.4 million animals have been treated and 829,000 vaccinated. Next. So now we briefly focus the 5 districts which have been completely inundated and where we are here. These are 2 slides pictorial. This is a rescue effort going on. These are the fields, and these bridges and roads completely collapsed. This is the railway bridge which disconnected the upper Sindh with Quetta. So this bridge is under construction at Mach in Bolan Valley. And we had to rescue, we had to reach to the people through helis to supply food stuff. Excellency, we have prepared a brief rehabilitation plan. 185,000 houses badly affected.
And the joint survey by federal and provincial agencies is under process, will be completed in 2 phases by end of September and at end of October. We estimate USD $245 million needed for reconstruction of those houses. And this rough estimate may increase. 9 lakh acres of crops have been completely damaged, or means I would say 0.9 million acres, or 400 hectares of land, 400,000 hectares of land. So we estimated 30 billion rupees, approximately $130 million needed to rehabilitate those who have been completely affected by these. Excellency, we prepared a complete Balochistan rehabilitation package, and I'm not going into the details. We have this package needed USD 1.028 billion to completely rehabilitate the physical infrastructure, the health, vet facilities, schools, colleges which have been damaged, and the houses which have been damaged completely or partially. So way forward, this is the last slide. Excellency, Government of Pakistan and Government of Balochistan have been financing the rescue, rehabilitation, reconstruction phase, but the disaster is colossal, beyond comprehension and beyond the capacity of the provincial government. So we have requested approximately USD 1.028 billion from the federal government. UN OCHA has completed rapid damage assessment in 10 districts, and the rest of the districts are underway. And rehabilitation survey is also likely to be completed soon. Proper studies on climate resilient cities and infrastructure is the need of the hour, and effective coordination, proper management and transparency will be ensured. There is an urgent need to support from UN and donor agencies in the shape of grants, whether in cash or kind, because the people are waiting for their houses to be rebuilt where they can be settled. Thank you. एक्सीलेंसी, जैसे अल्लाह की तरफ से ये चीज़ें जो हम पैदा की है उसने हमारे ऊपर ये चीज़ें आई हैं, और ये सख्तियाँ कौमों के ऊपर आते हैं। हमें ये चीज़ें आए हैं, इंशाल्लाह हम तैयार तो नहीं है, लेकिन ये कि हम किसी के सामने ये नहीं कहें कि हमें पैसे दे, लेकिन जो अल्लाह ने लाया और उसके ज़रूर ज़रिया किसी को बना दे भी ज़रिया बन जाता है। हम इस चीज़ के लिए Excellency, the Chief Minister is saying that this calamity, this challenge has come by the act of the nature, by God. But this has also offered opportunities. The challenges are colossal, and we have to respond with the help of the federal government and the donor agencies abroad. हेल्प तो अल्लाह करेगा, और ज़मीन पे जो ज़रिया बन जाए वो उनका नसीब जो बना देता है अल्लाह खुद ज़मीन। Okay, God will help, and people would like to reconstruct and rebuild themselves. I may say something. Yeah. There is only one point I disagree. Yeah. Can translate? Yeah. एक चीज़ है जो मैं उसे इत्तेफाक नहीं करता जो आपने I कहा। also believe in God. Yeah. No. But it was not God. It was the humanity. Yeah. Carbon emissions. Carbon emissions and Climate change, waging global war on warming. nature. इंसान का And किया था, the nature is किया तो striking हमने, back. लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ही So it's the responsibility Is of on people. human beings. Agreed. जो नुकसान हुआ है उसका हेल्प अल्लाह करेगा, जरिया कोई यूएन बन सकता है। God will help, but Yeah. UN or the federal government or the other Be the donor vehicle countries will be helpful. through which the Excellency, this is the largest province of Pakistan in terms of geography, in terms of population. It's very small, but distances are very large, and remote areas, and to reach to those areas is a very, very difficult task. Whatever infrastructure they had, it washed away. We just saw a railway bridge which was built during the times of British Raj. That's gone. And bridges, flyovers, I've seen myself touring all these areas along with the Chief Minister. It's been terrible here.
and they are all trying their best. They are trying to provide shelter, food, but this province, as I say, has lots of natural resources by the grace of God, but it lacks in terms of resources, in terms of finance and other resources. Then we need to focus this province after Sindh very sharply. And in that, I think your interaction with the international community would be very, very helpful, because they have to travel long distances. Road is not available, communication is not available, transport is not available, and look at the flight. So I think this province also needs equal attention, if not more. So we go to the affected families in the tents. वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त वो औस्ता मोहम्मद में मौजूद हैं, जहां पर सबसे पहले उन्हें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया गया, जबकि वज़ीर आला बलोचिस्तान भी इस मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने भी गुफ्तगू की, बात की, और अभी के मनाजिर ये हैं कि अब वो सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे, उनकी दाद रसी करेंगे। इससे कबल वो सक्खर में मौजूद थे, जहाँ पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाबी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया उन्हें, और वहाँ पर भी उन्होंने गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए कहा कि माली और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस करता हूँ। और इस वक्त वो औस्ता मोहम्मद में मौजूद हैं, जहाँ पर उनकी आमद पर सबसे पहले उन्हें सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बताया गया कि बलूचिस्तान सैलाब से कितना मुतासिर हुआ है, जिसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी गुफ्तगू की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस मौके पर मौजूद हैं और अभी वो सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें करेंगे।